Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today we are going to cover part 9 of NTA UGC NET series जहाँ पे हम पेपर 2 कॉमर्स के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कवर करेंगे फॉर 2023 एंड 2024. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक. Now first question, which of the following statement is true? First statement, a point estimate is an estimate of a range of population parameter. Yeah, point estimate is a single value estimate of the value of population parameter. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, ओनली सेकेंड. तो पॉइंट एस्टिमेट आपने याद रखना है, एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट होता है ऑफ द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, ना कि रेंज. अभी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी. इन स्टैटिस्टिक्स पॉइंट एस्टिमेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैंपल डाटा to calculate a single value which is to serve as the best guess or best estimate of an unknown population parameter. मतलब population बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें से हम एक पॉइंट एस्टिमेशन लेते हैं, उसे एज अ सैंपल डाटा यूज करते हैं ताकि हम एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर सकें जो कि हम बोल सकते हैं कि बेस्ट एस्टिमेट है ऑफ एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है. जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा रेंज वाला, रेंज को हम इंटरवल एस्टिमेट बोलते हैं, ठीक है, और पॉइंट एस्टिमेट हमारा सिंगल वैल्यू होता है, ठीक है. More formally, it is the application of point estimator to the data to obtain the point estimate. Statistical estimation refers to the process wherein the value of parameters are determined using the empirical data which is measured and observed. Point estimator can be defined as a single value which the best estimate the population parameter which is unknown. Therefore, point estimate is a single value estimate of the value of population parameter, ठीक है. और ये स्टेटमेंट हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. Now next question, the common factor that is shared between normal distribution and exponential density function. तो इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर जो ये शेयर करते हैं वो क्या है? x approaches infinity, both approach infinity. नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है हमारा. x approaches infinity, both approaches zero. Yes, this answer is correct. तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा बी, एज x approaches infinity, both approach zero, ठीक है. बोथ आर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत ऑप्शन है. बोथ आर बेल शेप, ये भी हमारा गलत है. तो करेक्ट आंसर इज बी. Probability distribution can be defined as a statistical function which will provide the various possible values as well as certainties or likelihood which a random variable can possesses in a given range. Normal distribution refers to the continuous distribution having maximum utility. The common factor that is shared between the normal distribution and exponential density function is that x approaches infinity but both approaches zero. Now next question, class boundaries are also called as, class boundaries को हम mathematical limits भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, mathematical limits. Data presentation refers to the process of presenting the data in the form of tables, graphical representation, and many other ways in order to make the data more understandable for the users and also easier for further analysis, ठीक है. तो डाटा को हम एक तरह से काफी फॉर्म्स में प्रेजेंट करते हैं ताकि इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है. In a frequency distribution or other form of representation, class boundaries are defined as mathematical limits, ठीक है.
Now, what type of decision deals with novel and non-repetitive problems? ठीक है, individual decision, program decision, non-program decision या non-economic decision. तो इसका correct answer है हमारा C, non-program decision. ठीक है. Management refer to the act of getting work done through others with the aim of achieving organizational objective effectively and efficiently. There are mainly 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Planning refers to the first function, which sets the organization objective and also determine course of action which shall be followed by the organization to achieve objective. तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो है एक तरह से वो डील करते हैं विद द नोवल एंड नॉन रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स. Now next question, what does the violation of principle of spirit the crops lead to? अगर हम जो principle of spirit the crops है अगर वो violate होता है तो उससे क्या होगा? तो वहां पे इसका correct answer है need for using penalties. ठीक है, तो correct answer है D, need for using penalties. Principle of management refers to the guidelines provided with respect to various managerial decisions as well as employee behavior towards business organization. Henry Fayol has given principle of management. The violation of principle spirit de crop result in need for using penalties in order to maximize production. ठीक है. Now next question, which of the following statement is true? The number of different hierarchical level of sales management within the organization is called span of control. Means span of control में क्या होता है? Different hierarchical levels होते हैं sales management के. या the number of individuals that report to each sale manager can be defined as span of control. तो इसका correct answer है B. Statement 1 हमारी गलत है, ठीक है, फॉल्स है. स्टेटमेंट सेकंड हमारी करेक्ट है. ठीक है. Span of control is a concept under organizational structure which refers to the number of subordinates which can be supervised by a manager or supervisor. The number of different hierarchical level of sales management within the organization is called span of control is false. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो सेकंड स्टेटमेंट है करेक्ट. Now, which of the following statement is true? Authority might or might not be official in nature. ये statement हमारी false है. Authority always official in nature होती है. ठीक है. Authority is given to a position or a post. Yes, this statement is correct. तो only second statement is correct. Authority अगर कोई किसी position पे है, किसी post पे है, तभी दी जाती है. ठीक है. Now next question, accountability and responsibility are elements of decentralization, informal organization या delegation. इसका correct answer है delegation. ठीक है. Delegation refers to the process in which manager or superior divide his work to his subordinates. Responsibility is the obligation of an employee or manager in an organization to perform a job assigned to him. Responsibility is not the basis for authority. Accountability is the process wherein subordinates regularly update their superior about the task finished as well as any other issues. Authority, accountability, responsibility are the element of delegation. Now next question, which of the following is a major drawback of task force type of management? तो यहाँ पे
टास्क फोर्स का मतलब क्या होता है, एक टास्क दे दिया उसी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उसी कंप्लीट करने में फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है, क्या अकाउंटेबिलिटी, इट्स स्टेटस इज टू इनफ्लेक्सिबल, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ लॉजिकल बेसिस फॉर टास्क फोर्स इंफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि ये इनफ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। बाकी अकाउंटेबिलिटी तो एक गुड पार्ट है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्लानिंग प्रॉपर की जाती है जब एक टास्क फोर्स किया जाता है, ठीक है, उस पर फोकस किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इट्स स्टेटस इज टू इनफ्लेक्सिबल। Now next question, which of the following statement is true? With the help of cost leadership, competitive strategy, the threat of entry by creating cost-based barrier cannot be reduced. अभी यहाँ पे देखो, cost leadership competitive strategy अगर होगी तो क्या हम कॉस्ट बेस्ड बैरियर को रिड्यूस नहीं कर सकते? ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अगर कॉस्ट लीडरशिप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होगी तो हम कॉस्ट बेस्ड बैरियर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, cost leadership and product differentiation are known as generic business strategy। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, ओनली सेकंड। Leadership refers to the process that is a part of directing in which individual group are motivated or persuaded to achieve organization goal in a given situation. There are different strategies with respect to leadership. The threat of entry by creating cost based barriers can be reduced with the help of cost leadership। अगर cost leadership होगी तो हम cost based barrier जो है वो reduce कर सकते हैं, ठीक है। And cost leadership and product differentiation are also known as generic business strategies, ठीक है। Now next question, which of the following statement is true? On the job training method do not cost much and are less disruptive। Yes, this statement is correct, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज चीपर देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में एक प्रॉपर हमें एक आर्टिफिशियल सेटअप करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो इसका आंसर आएगा ए। Now, which selection test judges the emotional ability of a candidate? Personality test, mental ability test, intelligent टेस्ट या नन ऑफ द अबव। तो इमोशनल एबिलिटी एक तरह से मेंटल एबिलिटी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये स्टाफिंग के टाइम पे ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, ताकि हम शॉर्टलिस्ट कर पाए कैंडिडेट्स को विद द राइट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। तो उसमें अगर हम इमोशनल एबिलिटी जज कर रहे हैं तो वहां पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट किया जाता है। Now, which of the following is not included in the process of succession planning, ठीक है। Focusing only on talented employee, forecasting future trend, review organization strategic plan, studying current workforce। अगर हम देखें सक्सेस प्लानिंग जब हम करते हैं तो फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेंड को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक प्लान्स को भी रिव्यू करते हैं, करंट वर्कफोर्स जो है उसे भी स्टडी करते हैं, बट हम सिर्फ टैलेंटेड एम्प्लॉइज पे ही फोकस नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। Succession planning refers to the process in which business organization will identify as well as develop the new leaders in order to replace the older leaders
in case they retire, leave the organization, or die. Therefore, new leaders are developed to replace the old leaders. It is a holistic process. It includes forecasting future trends, reviewing organization strategic plans, and studying the current workforce, but it does not focus only on talented employees. Now, next question, which of the following statement is true? Employee compensation is influenced by labor market but not the cost of living. तो ये तो स्टेटमेंट वैसे लेबर मार्केट से तो इन्फ्लुएंस होती है कंपेंसेशन, बट ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग से नहीं होती. नाउ ये स्टेटमेंट एक तरह से फॉल्स है. एम्प्लॉय कंपेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग बट नॉट लेबर मार्केट, ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है. ठीक है, एम्प्लॉय कंपेंसेशन जो है दोनों से ही इन्फ्लुएंस होती है, लेबर मार्केट से भी और कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू. कंपनसेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, बोनस. ठीक है, तो इट is influenced by both labor market as well as cost of living. Now next question, which of the following statement is false? Job design succeeds job analysis? नहीं, ये गलत है. Yes, मतलब ये false statement है. जॉब डिजाइन पहले की जाती है, फिर जॉब एनालिसिस की जाती है. ठीक है. Now, second statement, total quality management is inconsistent with the job analysis. तो ये statement हमारी true है, तो इसका आंसर आएगा only one. Job analysis refers to the process in human resource management wherein all the jobs are examined, vacant jobs are noted, the skill required to do such job are determined. The process of job design is done before the process of job analysis. ठीक है, and total quality management is inconsistent with the job analysis. Now next question, which type of arbitration is also known as contract interpretation? तो rights arbitration को हम contract interpretation भी बोलते हैं, तो ये आपने याद रखना है. Collective bargaining refers to the process in which representative of labor union and representative of business firm will negotiate and discuss specific matters and later on agree to follow a decision. And rights arbitration is also referred to as contract interpretation. It refers to proclamation that a collective agreement which was pre-existing is violated. Now next question, who has the sole responsibility for enactment of labor laws which applies to all over India? तो ये sole responsibility तो central government के पास ही है labor laws बनाने की. Now how are the deposits mobilized by bank utilized? Investment in government and other approved securities in fulfillment of liquidity stipulation. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बैंक यहाँ पे पैसा मोबिलाइज करती है. इन्वेस्टमेंट इन शेयर, कमर्शियल पेपर, डिबेंचर्स अप टू स्टिपुलेटेड सीलिंग्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो इसका आएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. Now, who settles the grievances of customers of bank? तो बैंक के कस्टमर के जितने भी grievances है वो आरबीआई ने कहा है कि ओम्बड्समैन करेगा. ठीक है, ओम्बड्समैन इसका करेक्ट आंसर है. The Reserve Bank of India is the apex bank of Indian banking system. So it is the Central Bank of India. It is only institution which issues
Indian rupee as well as formulate monetary policy. All the grievances as well as problem of customer of bank are to be settled by ombudsman according to the RBI. ठीक है. Now next question, crop loan granted for long duration crop becomes NPA, non-performing asset, if interest remain unpaid after it has become overdue for 2 years. ये statement तो गलत है, ठीक है. Interest is overdue for 2 crop season, ये है सही आंसर हमारा. जब इंटरेस्ट जो है 2 क्रॉप सीजन से ओवरड्यू हो जाता है उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. Non-performing assets refers to the classification of loans by the financial institution which are vulnerable to get defaulted. A non-performing asset is decided as such when a borrower of loan has not paid interest or the principal amount for a time period of 90 days. Means 90 दिन हो गए उन्होंने लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे नहीं किया तो हम उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देते हैं. ठीक है. एन अनपेड फॉर्म ऑफ लोन of a short duration shall be termed as a non-performing asset after 2 crop seasons. Now next question, which of the following statement is true? For calculating Sensex, all the Sensex stock are assigned proportional weightage. Yes, ये statement बिल्कुल correct है. Sensex calculate करने के लिए जितने भी Sensex stocks हैं उनको एक तरह से proportional weightage देखी जाती है, assign की जाती है. तो ये statement हमारी correct है. Next, Sensex became operational in 1978 and 1979. ये भी बिल्कुल correct है. And with the base value of 100, ये statement भी बिल्कुल correct है. तो आंसर आएगा C, both first and second. Now, if one of the regression coefficient is 1.25, then the range of other would be. अभी यहाँ पे हमें पता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट, 2 रिग्रेशन कॉफिशिएंट को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 1 आना चाहिए. ठीक है, तो अगर सपोज हम 1 को डिवाइड करें इससे 1.25 से तो क्या आएगा 0.8 आएगा. ठीक है, तो जो दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो 0.8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो उसकी रेंज क्या होगी 0 to 0.8 तक. ठीक है, अगर ये वाला पॉजिटिव है तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो करेक्ट आंसर है सी, 0 to 0.8. Now next question, which of the following statement is false? Government securities are issued by RBI on behalf of government. Yes, this statement is correct. Now next, money received from government securities are not used for development. ये statement हमारी false है. ठीक है, तो only second statement is false. Government securities refers to the financial asset or security which are issued by central government or state government या both to raise fund for funding its daily operation, military projects as well as special infrastructure project. The market in which these securities are traded is known as government security market, and government securities are issued by RBI on behalf of government, and money received from government securities are used for development of country. ठीक है. Now next question, which of the following statement is true? NBFC, non-banking financial corporation, is a company
registered under Companies Act 1956. Yes, this statement is correct. And they are not regulated either by RBI or by SBI. ये statement हमारी गलत है, ठीक है? तो true statement है हमारी only one. A non-banking financial company is a company which is registered under Indian Companies Act 1956, which involves in the business of loan and advances, acquisition of various financial securities, including those issued by the government, hire purchase, leasing, etc. और ये 1956 कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है? They are regulated by both RBI and SEBI. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है. Now, which bank launched the first mutual fund in India? इंडिया में फर्स्ट म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया? कैनरा बैंक ने, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कैनरा बैंक. और कब किया था? December 1987 में. In India, mutual fund was initially launched by central government by establishing the Union Trust of India (UTI). Mutual funds refers to the companies which pool or collect money from a number of investors and they invest the money in different financial securities of different companies. नाउ थैंक यू. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक.